My dear students, in this video, I'm going to tell you very important news about your examination, that is for compartment and improvement for class 10 and 12 in ICSC board. That is only for the students those are going to give the improvement and the compartment examinations. So there are the details about these examinations. Before that, if you like this video, then you can share, you can subscribe my channel, that is Study Bright, especially for the students and for the competitors. Those are going to give the competitions, different types of competitions. So get in touch, all of you. This channel Study Bright, you will get sufficient information about your career, about your study. Now let us begin this one. This you can see on the screen, that is Council for the Indian School Certificate Examinations, and this is the press release came on 6th August 2021, especially date of compartment and improvement examination. Earlier video I have told in that the latest date was there. The date was changed for this compartment and improvement examination for the registration. So in earlier video, this is the next video after that. So this is the date you can see for the compartment and improvement examination. For compartment examination and improvement for class 10, the dates examination will start from 16th August and conclude on September 2. मतलब 16th अगस्त से चालू होंगे एंड सितंबर 2 तक चलेंगे. Similarly, the compartment and improvement examination for class 12 students, this will also start on 16th August and will conclude on 7th September. You can see this one. Timetable is given here, I'll tell you, but some more things about this. The result declaration, जो भी डिक्लेरेशन रिजल्ट आएगा इसके मतलब कि एग्जामिनेशन होने के बाद, द अराउंड 20th सितंबर तक आ जाना चाहिए. द एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड, द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड around 20 September. But the main and very important, that is the how you will get the statement of marks and the pass certificate. If you are giving the compartment examination, means already you have the PCNA certificate, means pass certificate not awarded. And after compartment examination, if you are passed, means PCA pass certificate will be awarded. So you have to must return the previous statement of marks in the originally to the council through their school. अपने स्कूल में आपको जमा करना है, सबमिट करना है अपनी मार्कशीट को, और उसके बाद में वो मार्कशीट जाएगी काउंसिल, एंड देन द रिवाइज्ड स्टेटमेंट विल मार्क्स ऑफ पास सर्टिफिकेट विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स स्कूल, मतलब स्कूल में आ जाएगी. But if you will not submit the original certificate, original mark sheet, then you will not get the revised mark sheet or the new mark sheet. Similarly, for the candidate, those are giving the improvement paper also will follow the same procedure. जो मार्कशीट पहले वाली है उसे आपको सबमिट करना है और उसके बाद आपको न्यू मार्कशीट मिलेगी. लेकिन ज़रूरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपका मार्क्स तो वही माने जाएंगे जो कि आपके न्यू मार्कशीट में हो गए. यानी आप अपनी पुरानी मार्कशीट को कहीं यूज़ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज़ एनीवेयर बिकॉज इट इज़ अपडेटेड, इट विल बी अपडेटेड इन द वेबसाइट ऑफ द काउंसिल. तो जब भी मांगा जाता है, जैसे कोई जॉब होती है या कोई कंपटीशन होता है, कोई मतलब एनीवेयर, if the ask for the mark sheet, so they will means the companies or anything, any society will confirm
द मार्क्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफिस, बोर्ड वेबसाइट। ओके, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसलिए आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट को ज़रूर सबमिट करिएगा और उसके बाद में आपको नई मार्कशीट मिल जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट ने इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फिल किया बट नॉट गिवन, अगर किसी ने नहीं दिया तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो अपनी पहले वाली मार्कशीट है उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द टाइम टेबल फॉर द क्लास 10. Class 10 examination will start from, as you can see, from August 16 at 11 AM. सारे पेपर आपके 11 AM से होंगे, लेकिन 45 मिनट्स बिफोर आपको पहुंचना है, दैट इज एट 10:45 आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 15 मिनट्स पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10:45 पे, एंड एट 11 यू हैव मीन्स दिस इज द राइटिंग टाइम, दिस इज द 2 hours. ओके, तो 16 को इंग्लिश 1 है, 17 अगस्त लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, 18 अगस्त फिजिक्स, फ्राइडे 20 अगस्त हिस्ट्री एंड सिविक्स, सैटरडे 21 अगस्त द लैंग्वेज पेपर, दैट इज हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, एंड दिस इज ऑफ 3 hours. Then Monday 23 August mathematics, this is of 2.5 hours paper. Wednesday 25th August chemistry, 26th August geography, 27th August biology paper, Saturday 28th August commercial studies, Tuesday 31st August, that is the elective subject and in which the computer application or economic application etc. Then September 1 environmental science and September 2 economics. This is the concluding paper, the last at in September 2. Now for class 12, as you can see, this is the timetable for the class 12, and all papers will be, the duration of all papers will be of 3 hours. The Monday it will start 16th August with mathematics and other subjects. You can see political science, business studies, fashion designing, home science, Indian music, biotechnology. These are the papers, especially mathematics, and you have to reach before 15 minutes, means at 1:45 the paper will be distributed to the students, and then 15 minutes reading time, then 3 hours writing time. Then Tuesday 17th August English paper 1, 18th August history, there are the 4 papers, history, commerce, physics, mass media and communication. तो जो जिसका सब्जेक्ट होगा उसको वो पेपर देना है. Friday 20th August there are the 3 papers, psychology, accounts, chemistry paper. तो आपको जो देना हो वो आपको मिलेगा. 21st August environmental science paper 1. 23 August there are the 2 papers at 2 different timings. एक है फर्स्ट मीटिंग में आर्ट पेपर है 9 AM पे शुरू होगा, और एक है सेकेंड मीटिंग में 2 PM इंग्लिश पेपर 2 लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी आल्सो. ट्यूसडे August 24 2 PM economics biology paper. 25th August again 2 PM there are the 3 paper, language paper, बंगाली, हिंदी, मलयालम, कुछ भी है जो भी आप देना चाहें, मीन्स जो सब्जेक्ट आपका होगा. 26th August 2 PM geography. But 28 August and 4th September 9 AM paper will start with art paper 1 and 2. इसको ध्यान दीजिएगा. September 6 there are 2 different timings, at 2 PM computer science paper and at 9 AM art paper 4. And the last paper September 7 at 2 PM physical education paper. तो ये आपके टाइम टेबल हैं जिसमें आपको देना है, और कैंडिडेट मस्ट फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल. एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये सब लेके जाना है, एंड देन यू विल बी इंटर्ड. विदाउट मास्क नो वन विल इंटर टू द एग्जामिनेशन हॉल. तो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू मस्ट go through the this one COVID protocol, and then this is given here important instruction to strictly followed by the candidates appearing. Candidate must reach the examination center well ahead time to ensure a staggered movement and smooth entry to avoid overcrowding. Candidate must maintain social distancing in their movement
फ्रॉम द मेन स्कूल गेट टू द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब ये सारे हैं, अब मास्क है और सारी चीज़ें आपको लेनी है। ओके, सो this is the information about your examination, mainly in compartment and improvement examination. In the next video I will tell to the students those are now going to give 10th and 12th examination. Thank you.